स्टूडेंट्स, आज का दिन हमारे लिए बहुत हर्ष का दिन है। आज का दिन आशीर्वाद देने का भी दिन है। हम टीचर्स की तरफ से आप सभी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इतना अथक प्रयास या मेहनत किया है, आपके लिए 2 साल कोविड-19 का जो 2 साल गया वो भी बहुत कठिन रहे। आपकी सारी एक्टिविटीज़ ब्लॉक हो गई, जबकि आपको स्कूल में खेलना, दौड़ना, भागना, कूदना, हेल्थ भी फिट रहे, पढ़ाई भी, यानी मेंटली और फिजिकली आपका दोनों लॉस हुआ। उसके बाद भी आपने धैर्य बना के रखा, तभी आप आगे जाएंगे। हम सभी टीचर्स आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका जीवन बहुत ऊंचाइयों पर जाए, ताकि हम जब कभी भविष्य में मिले, हो सकता है आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़े या बहुत समय लगे, वो हमें अच्छा लगेगा। हमें अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे बहुत ऊंचाई पर गए। ऐसी प्रार्थना कौन करता है स्टूडेंट, जानते हैं? आपके जीवन में आपके पेरेंट्स हमेशा आपका भला चाहते हैं। Good afternoon, everyone. My name is Pritesh. I joined this institute last year for my 12th standard. I learned a lot of things here, all thanks to Kulvinder sir, Prem sir, and such super supportive staff. I also made some new friends here. Studying. We all studied and had a lot of fun together. In 3 to 4 months, we all will walk on different paths of our life, but I believe that I will take all these memories throughout my lifetime. I am glad to be here, but I will miss the work that I have done here and the generosity of such brilliant teachers and my batchmates. Thank you and have a nice day. Good afternoon to all the teachers, my fellow friends and staff members present here. My name is Akshay and I hope all of you know me. And those who don't know me, it's okay, but dil se bura lagta hai yaar. Okay, let's put the joke aside. I have been studying here from 4 years, and for the love I have received in these 4 years, I thank all the teachers, Prem sir, Shukla sir, Neet-Jee sir, Bagh sir, Kulvinder sir, and all the teachers behind the institute. I have a special bond with Bagh sir. We had a lot of fun till 10th class. Not only had fun, but we have also studied a little bit. Well, I have a lot to say, but सबका नंबर आना चाहिए यार। Let's talk about Ajit sir. Ajit sir, वो तो मेरे यार जैसे हैं यार, उनके बारे में क्या कहना? But he has also guided me a lot. He always tells me how to become a successful person in life, and without his guidance, I can. So, I'm thankful to him for his guidance. Now, Prem sir.
वो तो हमारे सबसे मजेदार टीचर है। जब भी वो पढ़ाते हैं तो यार पता ही नहीं लगता टाइम कैसे निकल जाता है। और सच बोलूं तो सही में पढ़ने का मजा तभी आता है। ना कुलविंदर सर वो यहाँ पे है नहीं, पर उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। कुलविंदर सर मुझे एक बहुत ही समझदार और मतलब जिनको मैं मानता हूँ, अपना आइडल मान के चलता हूँ। उनके अंदर जितनी नॉलेज है यार दुनिया भर में मुझे नहीं लगता किसी के पास है। और मैं सही में उनके जैसा बनना चाहूँगा बड़े होकर। और मैं उनसे प्रेरित होता हूँ इस चीज़ को लेकर। तो मैं उनको So in the end, I'll thank all the teachers again, and I will keep all the memories and lessons you have taught me throughout my life. So thank you very much, and all the best to all of you. पर कुछ तो खास है हाँ, वरना पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट तो शायद कभी नहीं था हमारा। गॉसिप से लेकर स्ट्रीट फूड तक ट्यूशन के जरिए हर चीज का लुत्फ उठाया है। पढ़ाई को बिना पीछे छोड़े हमने यादों से अपना पूरा घड़ा भराया है। अब तो जब भी ट्यूशन की गलियों से हमारा जाना होता है, रुककर कुछ देर वहाँ बस ख्यालों का थम जाना होता है। हर बार लगता है कि ये पुरानी नहीं, बस कल की ही बात थी, जब वो क्लास हमने आखिरी दफा वहाँ अटेंड करी थी। आज जब पुराने दिनों को याद किया ना, तो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुछ आंसू भी थे। समझ आ गया है हमें कि कल में जिंदगी तलाशने वाले हम बड़े ही नासमझ थे। Not without this. This place holds a very special place in my heart. Not just an institute to study in, a place to learn, a place to gain knowledge. This place is so much more than that. This place and one very special human, Vicky sir. You are not just a person I adore. You have always held my back in all this possible ways. I can never pay back to all what you have done for me. Ajit sir, the wisdom you share is what every one of us are grateful for. Your confidence is always filled with your students in every obstacle of life. These two people right here are no less than angels. I, Aditi, will always hold the beautiful memories of this place with me. Wherever life takes, this place will always stay this special with me. Thank you so much. My name is Pallavi of class 12. Today I am here to say thank you to my teachers for all their efforts they always put, not just to make my result good, but to make us a better person in life also. So thank you so much, Prem sir and Ambika ma'am, for being my teachers, for always motivating us. Thank you. Good afternoon, I am Deva Arora, and today I am here to share how thankful and grateful I am to have a teacher like Ambika ma'am, जिन्होंने हमारे को पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड किया है, हमारे को इंस्पायर किया है और हमारे को कन्विंस किया दैट वी कुड अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ. सो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ऑल दिस, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग आवर टीचर. थैंक यू मैम. Good afternoon everyone. My name is Abhinav Sharma. I would like to thank you Ambika ma'am, who being a truly outstanding teacher and always guiding us. I feel so lucky to have a teacher who shows all cares, love and guidance always. Thank you ma'am. की मम्मी शुक्ला इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करवा देती है, तो प्रेम सर के पास आता है वो पढ़ने, ठीक है? प्रेम सर क्लासमेट तो कर रहे हैं। हाँ भाई, लेट तो नहीं है ना अपनी क्लास में?
बेटा एक बार भी मैं बैठूंगा नहीं, ठीक है क्लास में? अगर तुमने मेरे को बैठा हुआ देख लिया तो मेरे को ऐसे हाथ पकड़ के भाग दिया, एक बार भी नहीं बैठूंगा। क्या रही हो? चलो तुम निकलो। इसके बाद सर इससे बात करते शिनचैन से। शिनचैन अपने क्लास में आया पढ़ने, तो सर इससे बोलते कि और बताओ बेटा वैलेंटाइन का कब प्लान है? तो शिनचैन कहता है सर मेरे को नीचे की सर तुम्हें टीवी चाहिए, आप कहाँ जाएंगे? तो सर ठहरे अपने सब तो लौटे। सर ने कुछ बोला नहीं, सर कहते चलो बेटा मैं तो अपना जाऊंगा, तुम अपना देख लो। इसके बाद बस सर और इसकी ऐसी बात हुई, सर आए क्लास में, दोबारा सर आ रहे हैं। हाँ बेटा होमवर्क इसने करा आज? किसी ने नहीं? इसलिए एक ने तो भला हुआ भाई, एक तो हाँ बोल दो सारा। बेटा बहुत एहसान कर दिया तुमने, बहुत एहसान कर दिया बेटा। सर ने शिनचैन से पूछा बेटा होमवर्क करा या नहीं करा? शिनचैन बोलता है सर आज मेरी माँ बाहर गई थी और मैं रीमा वाले की टाइपो चेंज कर रहा था, इसलिए मेरा होमवर्क उसकी टाइपो में गिर गया, आपको चाहिए? तो थैंक यू शुक्ला, थैंक यू। तेरी पहचान है मतलब तेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी का समुद्र की तलाश करो और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और टूट जाए शीशे पत्थर की तलाश करो।